2020-21. For environmental and cost benefit of this FMC project, and report has established reduction in the carbon emission and density and significantly saving in the annual diesel consumption and cost. These FMC project will reduce the manual intervention, precise easing the load on road network, promotes the cleaner environment and saving on diesel. It will be all round the railways and all the stakeholders. We here at SCCL determine the need of the country with efficient, fast and environmental friendly manner. Before I end my address, I will like to end which goes like this. गुलों में रंग भरें बाहर चलें, गुलों में रंग भरे बादनाओं बाहर चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले. I request all the stakeholders to participate in interactive mode meeting so that our Gulshan, our industry can be benefited with these discussions. I welcome one and all to this. आभार महोदय. हर गली लगा, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, वो जो आया. आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए साथियों, जो यह महत्वपूर्ण अवसर आज है स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन ऑन नेशनल कोल लॉजिस्टिक्स प्लान. यदि हम जो अभी कोल लॉजिस्टिक्स प्लान पॉलिसी बनी है उसके उद्देश्यों को विजन डॉक्यूमेंट में देखें तो उसमें कहा गया है कि टू डेवलप ए टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड, resilient, sustainable and trusted logistic ecosystem in the country. For हमारे एनर्जी सेक्टर में कोयला का योगदान हम सभी जानते हैं, हम सभी परिचित हैं. एक बेहद भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत के रूप में उसकी भूमिका है. ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है. यदि हम देश भर में लगभग 415 के जरिए परिचालित किया गया. आदरणीय श्री सलील झा सर, सीनियर एडवाइजर रेलवे CILO, अभिभाषण के लिए उनसे निवेदन है. सर, श्री सलील झा सर. Respected Shri S.K. Pal Sahab, Director Operation SCCL, respected Shri S.N. Kapri ji, DTP MP from SCCL, Shri I.D. Narayan, Regional Director CMPDI, Dr. D.K. Deputy Director Mining Chhattisgarh, Roy, our General Manager PMD from CIL Calcutta, Mr. Reddy from Ministry of Coal, dignitaries from NHAI, Coal India, SCCL, RITES, IRCON, captive coal block owners, industries. Ladies and gentlemen, has been told in the and the last assemblage of the cognoscenti and the stakeholders to discuss
the National Coal Logistics Plan developed by Deloitte. Going from here, sum it up, questions received from you and then submit it to the Ministry of. The first meet took place at Ranchi on 6th of this month, and the next at Bhubaneswar, day before yesterday, that is 21st. The second and the third happen to be of particular interest to us because of the following reasons. Maximum growth in coal loading is expected from MCL and SECL in years to come. Number two, on the concerned railway network, which is already quite significant, is going to increase manifold in years to come. To take care of that, various line capacity augmentation works are in progress and pipeline. Third, the command areas of MCL and SECL also have very large number of captive as well as commercial blocks. So, area of interest for us. Fourth, constitutes a major hub of all powerhouses and coal consuming industries, a hub which is expanding at a very fast rate. Therefore, those who would be the drivers of this growth in years to come happen to be located in this area. To engage with them, the stakeholders, to present to them our findings and elicit from them the opinion in regard to our analysis. In that regard, in today's seminar is quite encouraging. We have representatives from almost all sectors, and we look forward to meaningful discussion. Presentation goes on. Now, one question which arose during our meeting at was why study coal at all when coal itself is going to be eliminated by the renewables in years to come. That is the avowed goal of the world as in general. Now, such a doubt must be there in the minds of people who are gathered here also, present here in this hall. This coal versus renewable debate has a cause of achieving self-sufficiency and needs to be put into proper perspective. That is my view. In fact, that is what I also tried to make in the meet at Bhubaneswar and Ranchi. A bit. Is a country which is it is a country of 1.3 billion people with the average per capita electricity consumption being only 1/3 of the global average. And like other aspirational people, life. Now, that kind of life it is also you require to lead a proper life. That is the kind of life we have now espoused and we are trying to live. We have just to have a kind of a taste of that American kind of a life. Some section of ours
but a large section still is quite deprived. I don't know how many of you have gone to. I do that very often. Astounded by the change that has come about in the last 7 to 8 years. Electricity has villages remain lighted throughout the night. Night-long cacophony of film songs, of bhajans could be heard, which was never there earlier, and that has disturbed the peace and tranquil villages. Use of induction stove, washing machines, fans have become obsolete now, ACs, common sight. And all this requires a lot of energy, and this is only just, this journey has just begun. Now come to the railways. Almost 90% of the broad gauge, and broad gauge happens to be the preponderant gauge right now in the Indian Railway. And in coming 1 year or so, it will become. Now what does this mean? This means that the entire load of transportation by rail has shifted diesel to the power grid. You must have seen the stations, railway stations. Never have seen this kind of illumination. Lighted at par with the airports. All running rooms where guards, which earlier happened to have very modest kind of facilities, they have all been air conditioned. You see on the road right now, both two-wheelers and four-wheelers, and the number is growing very fast. So that means also will be shifted gradually from diesel and petrol to the electricity grid. Have you noticed the change that has come about in the illumination of our marketplaces, our offices, and the temples? All these have become energy guzzlers now. An average middle-class Indian now cannot tolerate a temperature more than 25 degrees centigrade. That has become anything more than 25 degrees and you become kind of uncomfortable. And that's why all has now begun to hog the headlines. Therefore, our homes, our offices, cars, trains, marketplaces are all getting air conditioned. We are sending our children to schools in AC buses, to AC schools. So they are getting conditioned to less than 25 degrees environment from their very childhood. It's a very, very damaging condition. With this fetish for air-conditioned existence, what it would do to the environment is a question we are not going to today's discussion. But certainly it will bring a lot of pressure on the electricity grid. Now this insatiability is not going to be met by the renewables or through renewables. Solar energy, given its wind and hydro, given their seasonality, and credible storage mechanism. Also, that nuclear energy is not going to be a credible source in India for years to come. I personally feel that this demand for coal would persist, would grow, and grow to an extent may not be able to fathom right now.
So for better or for worse, we would continue to be prisoners of coal. That's and the only solution where coal dependence would by consuming less, change of mindset is very, very far off from now. So therefore, are an exasperated lot today, chasing every ounce of coal, ounce of VCs. If the potentate of Rail Bhavan trying to manage the wagons, to make available the wagons, एक्चुअली ऑनबोर्डिंग में हुआ नहीं है आप जो आपने जो भी डाला है school, which happened to have been written off from 4-5 years ago, 5-6 years ठीक है आपकी बात ठीक है मेरा वो मेरे पास वो मेरे कंप्यूटर and is going to remain with us for days to come. Let's not harbor any doubt about that. Now, having established this primacy of coal in our fuel supply mix, let's the subject of today's discussion. Now, this study has been carried out at the Ministry of Coal by and the objective of the study was to gauge the pressure ever increasing coal traffic would cause the already congested railway routes, and 2030 has been kept in as the target. The methodology adopted in preparing this report, it was, we analyzed both the sectors, the regulated and the non-regulated sector. For power sector, carrying out a top-down as well as bottom-up approach. For the approach happened to be mostly bottom-up because, you know, their numbers happened to be vast and we didn't have that much of data available. It happened, it was so, that's why only top-down, it was not bottom. For power sector, when we did this analysis, we utilized the macroeconomic forecasts given by Government of India for different sectors, and from there we could calculate the coal demand which would be there. That too into number of rakes that will be required. So having done this analysis, then it came to the coal routes, and for that a detailed analysis, node analysis of the entire railway network, node by node, junction by junction, quite painstakingly was carried out by Deloitte boys. And after having done that analysis, it was established that nearly more than 20 routes would be such where, despite the augmentation works that are going on, there would be congestion. So further works would be required. This is a detailed analysis which has not ever been taken up. And if you endeavor to go through this voluminous report, you are bound to be struck by not only its sweep, but also by the depth in which this whole study has been carried out. This is perhaps the first integrated and intensive look into the logistical issues pertaining to movement of coal. We expect you to critically assess our analysis. I am just telling this to the stakeholders.
that we expect you to critically assess our analysis, our reasonings, appraise our assumptions, and evaluate the results we have arrived at. We expect you to bring to our notice the gaps, the glitches, if any, so that by addressing them, this whole exercise becomes more worthwhile. Thank you. थैंक यू सर। साथियों, एसीसीएल के तत्वावधान में यह महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन आमंत्रित हुए हैं। यदि हम नतीजों की बात करें तो यह वित्तीय वर्ष के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। 167 मिलियन टन कोयला, भूमिगत खदानों से कोयला उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि, पावर सेक्टर को डिस्पैच और ओबीआर में लगभग 35% का इजाफा। इस प्रकार से सीएमडी डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा, निदेशक मंडल और पूरी टीम ने शानदार नतीजे दिए हैं। एसीसीएल शीर्ष प्रबंधन से हमारे बीच आज आदरणीय श्री एसएन कापरी प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, उन्हें इस महत्वपूर्ण अवसर पर आमंत्रित करना चाहेंगे उनके अभिभाषण के लिए। कापरी सर। आदरणीय इस मंच पर आसीन टेक्निकल ऑपरेशन श्री एस के पाल साहब, डॉक्टर सलील झा, डॉक्टर डी के मिश्रा, श्री आई डी नारायण, श्री ए के राय साहब, सामने हमारे बैठे आए स्टेक होल्डर्स, कैप्टिव माइंस के रिप्रेजेंटेटिव, हमारे एचओडी, हमारे सभी साथियों, इस स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन नेशनल कोल लॉजिस्टिक प्लान मीट में मैं आप एसीसीएल के तरफ से आप लोगों का सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। तो इंटर एक्शंस एक्टिव सहयोग से श्री राय साहब के द्वारा प्रायोजित किया गया है और इसके पहले 2 जगह पर ये आयोजन हो चुके हैं। हमको इस इंटरेक्शन का सर्वप्रथम हमको क्या उद्देश्य है, उद्देश्य जानने की जरूरत है कि हम क्यों कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी है कि हमको ये इस तरह की इंटरएक्टिव सेशन का आयोजन किया जाए। हम लोग किसी भी कोल, और ये जो कोल है हम लोगों का देश के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं, आज के डेट में जो हमारा 70 बेस्ड है और जो नियर अगले जो डिलाइट के द्वारा, डिलाइट के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उनका भी यहाँ स्वागत। ये जो एक पीपीटी यहाँ प्रेजेंट किया जाएगा, उसमें जो हम लोगों का जो 2030 तक जो क्या प्लान है, हमको कितना कोयला उत्पादन करेंगे, कितना डिस्पैच करेंगे। कोयला हम उत्पादन करेंगे, हम लोग 1BT प्रोग्राम है जिसमें हमको 25-26 तक एसीसीएल को 260 मिलियन टन करना है, 30-31 तक 288 मिलियन टन करना है और पूरे कोल इंडिया को 30-31 तक 1130 मिलियन टन करना है कोयला करेंगे। उत्पादन के साथ अगर हम उसका ट्रांसपोर्टेशन, इवैक्यूएशन, मार्केटिंग का नहीं सोचेंगे, अगर आपका इवैक्यूएशन सिस्टम ठीक रहेगा आपके जहाँ के उत्पादन के जगह से, क्योंकि कोल स्थान में रहते हैं
और इसीलिए हमको एविक्वेशन सिस्टम की ज़रूरत है। अब रही एविक्वेशन सिस्टम में जो हम लोगों का कोल इंडिया एसईसीएल एज ए होल बहुत सारे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं, CRL, CWRL, डिफरेंस जो हमारे कोल फील्ड्स हैं, माँ ड्राइगर कोल फील्ड्स है, सुहागपुर कोल फील्ड्स है, जो भी जितने भी CIC कोल फील्ड है, कोरबा कोल फील्ड है, हर जगह हम लोग रेलवे लाइन कर रहे हैं, जिसमें CRL जो धर्मजयगढ़, कोरबा से धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ से उर्गा, फिर उर्गा, तो ये सब जो कर रहे हैं। और इस एरिया में सिर्फ कोल इंडिया के ही ब्लॉक नहीं है, SECL के ही ब्लॉक नहीं है, हमारे बहुत सारे कैप्टिव वो अदर देन कोल इंडिया के ब्लॉक्स हैं, उसमें प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, MDO हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको उत्पादन है, उनको भी एक जगह से दूसरे, तो जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसमें उन लोगों से भी कंसल्ट जानना है कि इसमें आप लोगों का क्या सहयोग रहेगा, क्या आप लोग इसका फायदा मिलेगा ये, और आप लोग आगे क्या कर सकते हैं, क्या प्लानिंग हो सकता है कंट्री के लिए प्रोग्राम एज ए कंट्री वाइड जो सभी की सुविधा के लिए इजी हो, जिससे देश की एनर्जी सिक्योरिटी पूरा हो। इस संदर्भ में डिलाइट के द्वारा एक आएगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एरिया वाइज ये जो प्रोडक्शन प्लान का है कि डिमांड है, कहाँ है, MGR है, गुड्स सेट्स है, बेल्ट रोड है, जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और रेलवे है। तो जितने भी फ्यूचर कोल जो फ्लो है इंडिया लेवल में, इसका आप इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कशन करना है। ये बात उठती है कि कोयले के भविष्य का क्या है। ऐसा नहीं है, हम लोग कोयले का भविष्य अभी भी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है थर्मल एनर्जी का 200 और कंस्ट्रक्शन है। ऐसा नहीं है कि हम कोल एनर्जी का फ्यूचर नहीं है, कोल का फ्यूचर नहीं है। कोल का फ्यूचर अगर रिन्यूएबल भी बढ़ेगा, भले परसेंटेज घटेगा कोल का, लेकिन जो प्रोडक्शन जो 2037 तक करीब 1437 मिलियन टन कोल का, इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है कि कोल का डिमांड नहीं होगा, कोल का इवैक्यूएशन नहीं। हम लोगों को आगे बढ़ना है, हम लोगों को तो तब तक क्या होगा, हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, स्टॉक बढ़ेगा, उसमें होंगे क्यों, और मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉजिस्टिक प्लान करना जरूरी है। आगे जितने भी समय आ रहे हैं FCEC कंप्लायंस बहुत ही कठिन होते जा रहा है। हम लोगों को जिस माइंस का भी 1 मिलियन टन से अधिक कोल प्रोडक्शन है उसको हमको, तो देयर आर सो मेनी कंडीशंस हम लोगों को इन EAC के द्वारा इम्पोज किए जा रहे हैं भविष्य में, और उसको लेकर के जो हम लोगों को आज ये इंटरएक्टिव सेशन में बात करनी है, करें जो देश की एनर्जी सिक्योरिटी पूरा हो। धन्यवाद। साथियों, कहा जाता है कि लीडरशिप रियलिटी में बदलती है। हमारे बीच ACCL शीर्ष प्रबंधन से आदरणीय श्री SK पाल सर उपस्थित हैं यहाँ पे, डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशंस। इस महत्वपूर्ण अवसर आदरणीय श्री SK पाल सर।
सभी को सादर प्रणाम। आज की इस स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन ऑन लॉजिस्टिक प्लान, इस मीट के अवसर पे मंचासीन हमारा साथी डायरेक्टर कैपरी साहब, झा साहब, रेलवे लॉजिस्टिक देख रहे हैं, एडवाइजर